होमवर्क क्वेश्चन किए थे आदित्य, ये हो चुका था। तनिष्क, आपको आइडिया है ना ये सब का? मैंने ये सब सारी चीज 3 लेक्चर ले चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। तो ये मैं रिसोर्सेस में कॉम्प्लेक्स नंबर का नोट्स अपलोड कर दिया हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास तक पढ़ाया था। आदित्य, आपने कर लिया है होमवर्क क्वेश्चन है? क्या आया है? लोकस क्या है? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। मैं डिस्कस कर दूं? मैं डिस्कस करता हूँ। रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस वन। आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लीजिएगा, राइट? सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन, इट मीन्स x plus 1 plus iota y. Real part is equal to mod of z. It means x minus 1 का square plus y square का root. So real part of z is x plus 1 is equal to x minus 1 का square plus y square. आप solve कर लीजिए इसको. So x square plus 2x plus 1 is equal to x square minus 2x plus 1 plus y square. So x square cancel out, 1 is cancel out. So get y square is equal to 4x. So locus is parabola. Real part of z plus 1 का मतलब है कि आपको z plus 1 क्या होगा? z plus 1 is x plus 1 plus iota y. उसका आपको रियल पार्ट बताना है। We want to solve question is if alpha and beta are different complex number, with mod of beta is equal to 1, then आपको वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. Do that. A option is 1, B is 2, C is minus 1, D is none of these. Answer this question. You are doing Samita. Samita.
Anish, do. Yes, sir. क्या गिवन है? मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1. इट मींस कि आप अगर स्क्वायरिंग करेंगे मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आल्सो. सो नाउ अब मैंने बताया था ना मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को आप जेड इनटू कंजुगेट ऑफ जेड लिखेंगे. सो नाउ इफ यू अप्लाई बीटा इनटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू 1, राइट. नाउ आपको वैल्यू किसको बताना है? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉड. तो आप 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 को आप देखिए 1 इक्वल टू आप रिप्लेस कर दीजिए बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा इनटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड. नाउ आप बीटा को कॉमन ले लीजिए तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा इज कॉमन. So now beta conjugate minus alpha conjugate mod. Clear है? So now आप मैंने ऐसे बताया था एक प्रॉपर्टी Z1 by Z2 का mod हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं mod of Z1 अपॉन mod of Z2. तो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा का बाई अल्फा का mod और mod of बीटा ये भी बताया था Z1 और Z2 का mod हो तो आप mod of Z1 into mod of Z2 लिखेंगे. तो नीचे में अगर इस तरह ब्रेक करेंगे तो इस तरह से भी लिखेंगे. ठीक है. अब देखिए ये चीज मैंने बताया था जे प्रॉपर्टी जेड जेड का कॉन्जुगेट का मॉड और जेड का मॉड दोनों इक्वल होता है, राइट. और Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड इक्वल होता है, राइट. अगर इसका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा और मॉड ऑफ बीटा और बीटा माइनस अल्फा को मैं आल्सो में बीटा माइनस अल्फा का मॉड लिख सकता हूं कैंसिल आउट. सो 1 बाय बीटा मॉड दैट इज 1 बाय 1 दैट इज 1. सो 1 इसका आंसर हो गया. ये इज द करेक्ट. तो मैंने बेसिकली क्या यूज किया बस प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये सारी प्रॉपर्टीज और इसे क्वेश्चन उसी को मैंने उसी का अप्लाई हुआ ना. बेसिकली देखिए ये सारी चीजें प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ये सारी प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली आपको आइडिया हो जाना चाहिए प्रॉपर्टीज का कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. देखिए इस प्रॉपर्टीज का यूज किया ये सारे प्रॉपर्टीज का यूज हुआ. क्लियर है? एनी डाउट? एक क्वेश्चन इफ 5Z2 by 7Z1 is purely real, purely imaginary, आपको then the value of mod of 2Z1 plus 3Z2 upon 2Z1 minus 3Z2 इसका आपको वैल्यू बताना है. नहीं डिवाइड हो रहा है. ट्राई कीजिए. ऑप्शन देता हूँ a is equal to 1, b is equal to c is equal to 2, d is equal to -1. इसका यूज कीजिए. आपको प्योरली इमेजिनरी गिवन है. गिवन क्या है?
आप लोग पहले ट्राई कीजिए। Anyone got the answer? Aditi? Can anyone say the answer? Which option is correct? Srisha, are you doing or you okay, do that. Tanish, are you doing? Yes, sir. ये क्लास में रेगुलर प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अगर आप रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप पहले ये चीज पढ़े होते तब कर पाएंगे ना, इजी लगेगा आपको। तो आपको रेगुलर होना जरूरी है क्लास में, अगर आपको सीखना है, क्योंकि एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है। मेरे साथ चीजें मैंने डिस्कस किया कर दिया हूँ। आदित्य, आप कर रहे हो क्या? गिवन है 5Z2 अपॉन 7Z1, जो कि एक प्योरली इमेजिनरी है। तो मान लेते हैं कि ए आयोटा होगा, ए कॉफिशिएंट आयोटा, रियल पार्ट 0 है मींस। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा Z2/Z1 इज इक्वल टू 7/5 ए आयोटा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें फाइंड किसका करना है, 2 टाइम्स Z1 प्लस 3 टाइम्स Z2 अपॉन 2 टाइम्स Z1 माइनस 3 टाइम्स Z2। कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? अगर मैं Z1 से डिवाइड कर दूं तो हम यूज कर पाएंगे। तो मैंने Z1 से डिवाइड, Z1 कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 3 Z2/Z1 अपॉन, यहाँ से भी Z1 कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 3 टाइम्स Z2/Z1 कमॉन। अब Z2/Z1 और Z1 कैंसिल आउट। जब आप Z2/Z1 लिखेंगे तो बेसिकली आएगा, और जब दोनों का आप जब ब्रेक करेंगे इस तरह कॉन्जुगेट लगाएंगे मॉडुलस प्रॉपर्टीज, आप ए लिखेंगे 2 प्लस 21/5 ए आयोटा कमॉन अपॉन 2 माइनस 21/5 ए आयोटा कमॉन। तो दोनों का बेसिकली जब मॉडुलस लेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि x प्लस आयोटा y का मॉडुलस इक्वल टू x माइनस आयोटा y का मॉडुलस, दोनों का सेम ही होता है, बिकॉज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये तो होगा। तो दोनों का होगा तो इसका मतलब वन आंसर हो जाएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? Now, question is, if mod of Z1 equal to 1 and mod of Z2 is equal to 2, then आपको वैल्यू बताना है Z1 प्लस Z2 mod of Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस mod of Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। समझते हैं? तो लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसका बता दीजिए 10 सेकंड आंसर।
Aditi, which option is correct? She. प्रॉपर्टी नंबर, ये प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था। ये प्रॉपर्टी सेम है, mod of z1 plus z2 mod of z1 minus z2 plus square is equal to 2 times mod of z1 square plus z2 square। क्वेश्चन इसी से, इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा आंसर सही है? मैंने प्रॉपर्टी बताया था, mod of z1 plus z2 का स्क्वायर प्लस z1 minus z2 mod का स्क्वायर, that is 2 times of mod of z1 square plus mod of z2 square। यहाँ से आपको 2 times mod of z1 कितना दिया हुआ है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, so that is 10। This is correct option। Any doubt? Tanish? Tanish, any doubt? No, sir. Samita? No, sir. Samita? Okay, good। So एक क्वेश्चन कीजिए। If Z1 and Z2 are the roots of the equation, क्वेश्चन इसलिए डिस्कस होगा ताकि आपको पता चल जाए कि जितने पहले बताया गया चीजें है वो किस तरह से यूज होता है, कोई उसका यूज करने आ रहा है। Z1 and Z2 are the roots of the equation z square minus az plus a square equal to 0। आपको बताना है mod of Z1 by Z2 का, Z1 by Z2 mod का वैल्यू। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ z, इसका रूट Z1 Z2 है। z स्क्वायर, आप इसको कीजिए z स्क्वायर माइनस az प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका रूट्स Z1 है Z2 है। अब Z1 Z2 क्वाड्रेटिक पद वाला आप फाइंड कर लीजिए, उसका आंसर बता दीजिए। आप x इक्वल टू क्या लिखते हैं? x x स्टार, उसी तरह आप लिख लीजिए Z1 क्वाड्रेटिक को करके इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाय 2a इज 2। सो Z1 इज इक्वल टू को प्लस को ले लीजिए a प्लस माइनस रूट 3 a आयोटा अपॉन 2 एंड Z2 Z1 प्लस को ले लीजिए, Z2 माइनस को ले लीजिए, कोई भी किसी को ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस रूट 3 a आयोटा बाय 2। आपसे पूछा गया है मॉड ऑफ Z1 बाय Z2, तो इसके आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2, दोनों का मॉड सेम है, तो आंसर 1 होगा। 1 इज द करेक्ट आंसर।
Now, topic is additive and multiplicative inverse. This is the topic. Now, topic is additive and multiplicative inverse. See, additive inverse. अगर आप एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड का निकालेंगे तो माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड. एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड. नाउ of z is equal to 1 by z. Z का multiplicative inverse is 1 by z. Question is find inverse of first. Z is equal to 1 plus iota. Second question is Z is equal to z minus 4 iota. Third is Z is equal to minus 7 plus 5 iota. तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा माइनस जेड. सो पहले का आंसर हो जाएगा माइनस जेड कर देना बेसिकली. मैंने तो डिस्कस. सो एडिटिव इनवर्स पहले का आंसर हो जाएगा -1 minus iota. Second का आंसर 3 minus 3 plus 4 iota. Third का आंसर 7 minus 5 iota. बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना. Question is find the multiplicative inverse of z is equal to 2 iota plus 3. So multiplicative inverse क्या हो जाएगा? Z का 1 upon z, that is 1 upon 3 plus 2 iota. So इसको आप रेशनलाइज करेंगे 3 minus 2 iota upon 3 minus 2 iota. So get 3 minus 2 iota upon 9 plus 4. That is 3 minus 2 iota by 30. So this is the multiplicative inverse. Find it out. Now discussing more important topic, that is argument or amplitude of Z. This is a very important topic. So see carefully. Till now, any doubt? Up to now, any doubt? Samita, any doubt? Srisha? No doubt, sir. Srisha? No. Tanishq, any doubt? No, sir. Aditi? Aditi? Are you here? Yes, sir. Any doubt?
No, sir. So इस टॉपिक में जो बता रहा हूँ मैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बेसिकली थीटा है, आप जैसे फाइंड करते हैं ना थीटा tan थीटा, वही है। जैसे देखिए z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब पॉइंट फॉर्म में x y लिखते हैं। पॉइंट यहाँ पे x y, this distance is y, this distance is x। now ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से। ओके, सो एक थीटा एंगल बना है, थीटा विद x एक्सिस q। so in triangle OPQ tan theta is equal to क्या बोलेंगे y by x b by b, so y by b, so theta is equal to tan inverse y by x, so theta is equal to tan inverse y by x। अब most important thing that you need to remember every time about the principal value of the argument, शॉर्ट में ए आर जेड, आर्गुमेंट को शॉर्ट में ए आर जेड लिखते हैं। ए आर कहीं लिखा रहेगा या ए आर जेड ए आर जी लिखा रहेगा या ए आर लिखा रहेगा। सो ए आर जी ब्रैकेट जेड, आर्गुमेंट क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लाई बिटवीन माइनस पाई टू argument of z and of z lie between pi। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस पाई पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है और पाई पे क्लोज ब्रैकेट है। सो जो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट जो थीटा जो होगा वो बेसिकली माइनस पाई से लेके पाई तक ही लाई करेगा। ये वी नीड टू रिमेंबर, principal value of the argument of z is lie between minus pi to pi, minus pi पे open, pi पे close। see the by the diagram, first quadrant, second quadrant, according to the quadrant depends the theta। see if point x comma y in the, if the first quadrant, so tan theta is basically y by x, so theta is equal to tan inverse y by x, argument of z is theta। now see if point is q point, that is second quadrant, that is minus x comma y coordinate। so now making angle with x axis is alpha, this is a theta, this is a alpha। so now see this is the argument of z, that is pi minus alpha। if the second quadrant, pi minus alpha is the argument of z। now if in the third quadrant, if point is r, minus x comma minus y is the coordinate for r। so now making angle is beta with the x axis। so now argument of z is basically, argument of z is basically this angle, that is minus pi। this angle is argument of z is for the third quadrant, मैं लिख दूंगा एक बार ध्यान रखिए, minus pi minus beta for the third quadrant। if the z is lying in the third quadrant, argument of z is minus pi minus beta, confusion होगा इसको लिखने से। this angle is pi minus beta।
Clear? Now, in the fourth quadrant, it is x, minus y. फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो x एक्सिस से लेट गामा बना रहा है, ठीक है? तो जो गामा होगा बेसिकली वो tan इनवर्स y by x हो जाएगा बेसिकली। Gamma is equal to tan inverse y by x. Now, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है। मॉड ऑफ लीजिए, tan अगर अल्फा की बात करें तो tan अल्फा आप लिखेंगे मॉड ऑफ y by x, ठीक है? मॉड ऑफ y माइनस x, ठीक है? ये बेसिकली क्या होगा y by x. So now alpha is tan inverse y by x. Now so argument of z in the second quadrant, argument of z is pi minus alpha. क्लियर है? मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्लियर हो जाएगा। argument of z is pi minus alpha. Now see the beta is basically similarly beta is tan inverse y by x. Now so argument of z in the third quadrant, that is minus pi minus beta. Clear है? और मैं लिख रहा हूँ is for the second quadrant, this is the third quadrant. Clear है? Now fourth quadrant में होगा तो क्या होगा? fourth quadrant में argument of z delta gamma is equal to tan inverse y by x. So basically यही आपका हो जाएगा argument of z. माइनस में गामा आएगा निकल के आपको। So argument of z is equal to minus gamma आप लीजिएगा। आप सिंबल का y by x डायरेक्टली कीजिएगा, ठीक है? और y by x करने के बाद आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो नो डाउट 0 से 5/2 में ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बिकॉज आपको माइनस पाई से 5 में ही रेंज कर रहा है ना। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं फाइंड करने के लिए फाइंड करके बताइए। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज find argument of z. First is z is equal to 1 plus I. इसका फर्स्ट से बताइए आंसर एवरीवन। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by 1 y by x, that is 45 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज नो to 45 degrees. Now second question, z is equal to -1 plus iota. ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? This is in the second quadrant. So second quadrant में बीटा क्या होता है? बीटा is pi minus alpha, right? No, मैं बीटा की बात कर रहा हूँ तो पाई ये बेसिकली बीटा की बात कर, कोई बात नहीं। जो 45 डिग्री आएगा तो पाई माइनस 45 डिग्री कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको हम बोल देगा बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस
45 degree, that is 180 degree minus 45 degree. That is 135 degree. Second quadrant में आप लाएंगे 180. Third question, z is equal to -1 minus iota. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखेंगे? फिर गामा है, गामा क्या लिखेंगे? माइनस पाई माइनस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. यहाँ से निकल जाएगा माइनस 135 डिग्री. Now for fourth quadrant, z is equal to 1 minus iota. तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप माइनस पाई बाई 45 डिग्री लिख देंगे. थीटा इक्वल टू माइनस 45 डिग्री. क्लियर है? Any doubt? Any doubt? बस आपको याद रखना है कि बेसिकली आप y by x कीजिएगा, ठीक है? y by x के आप देख लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नो नीड टू एनीथिंग प्लस और माइनस डायरेक्टली. देखिए y by 1 यहाँ 1 by 1 आया 45 डिग्री. सो 45 डिग्री इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट पाई में से आपको 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट. देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x से सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 135, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस 135 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा. क्लियर है? नाउ if purely imaginary, if complex number is purely imaginary, z is equal to 5 iota. Basically tan theta is y by x. Y is 5, x is 0, so theta is equal to pi by 2, 90 degree, right? So argument of z is equal to 90 degree. Now if z is equal to minus 3 iota, so now argument of z is equal to minus 90 degree. Because minus 3 iota कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो माइनस 7. now z is equal to purely real, like only 5. so tan theta is equal to y by x. Y is 0, x is 5, so theta is equal to 0 degree. so argument of z is 0 degree. now आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है. आर्गुमेंट z is equal to minus 100, so tan theta is equal to 0 by minus 180, that is 180 डिग्री आएगा. पे कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? बताइए. so minus 180 degree. so argument of z is basically pi or 180. z is equal to 1 plus root 3 iota, purely real. so theta is equal to 0 degree. so argument of z is equal to 0 degree. now see, if z is equal to 1 minus root 3, that is negative number, so theta is equal to pi. so argument of z is equal to pi. I think clear होगा, no doubt. tan theta तो आपको फाइंड करना था y by x. Any doubt? Srisa, any doubt? No, sir. Okay. Now, Shamita, any doubt? मैं प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ. so प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ आर्गुमेंट का.
See, first property, argument of Z conjugate is equal to minus of argument of Z. अगर आपको इसे ध्यान में रखना है, argument of Z का जो conjugate का होगा वो minus of argument of Z होगा, right? Now, argument of 1 by Z is basically minus of argument of Z. Now, third point is argument of Z1, Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2. Now, similarly, if n complex number multiply Z1, Z2, Z3 up to Zn, so it is equal to argument of Z1 plus argument of Z2 plus argument of Z3 up to argument of Zn. Multiply there on it, so we can write five years. Now argument of Z1 by Z2. आप लिखेंगे argument of Z1 minus argument of Z2. Now sixth property is argument of Z power n is equal to n times argument of Z. Argument of 0 is, can you say anyone defined or not? Argument of 0 is not defined. सबका प्रूफ करके दिखा दो प्रूफ. क्लास में आप लोग को प्रूफ दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज का. Z is equal to x plus iota y है, equal to p is x over y. So argument of Z is equal to theta. Now argument of Z conjugate is equal to, बताइए argument मतलब Z conjugate हम क्या लिखेंगे? Z conjugate is x minus iota y. So fourth quadrant में हो गया. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा. सिर्फ माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z. एक प्रॉपर्टी लिखा था ना, पहला प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z. नाउ वन थिंग, मैं इसके बारे में डिटेल से शेयर करूंगा, बताऊंगा. Z को आप r e पावर आयोटा थीटा ले सकते हैं, ठीक है. तो 1 by Z is equal to 1 by r e power minus iota theta. So argument of 1 by Z is basically minus theta or minus argument of Z. ये लिखा था ना argument second property, argument of 1 by Z is equal to minus of argument of Z. Now let prove the third property. Z1 is equal to R1 E iota theta 1. Z2 is equal to R2 E iota theta 2. अब
argument of z1, z2. That is theta 1 plus theta 2. So now we can write argument of z1 plus argument of z2. Now, clear है? Any doubt? Till now, any doubt? अब एक बार देख लीजिए ध्यान से. The propose. Second, same properties. Argument of iota z क्या होगा? Iota z. आप multiply theorem लगा सकते हैं. Multiply z1 z2. So we can write the argument of iota plus argument of z. So now argument of z is iota is pi by 2 purely imaginary. So pi by 2, right? Plus argument of z. Now second is argument of minus iota z. That is you can write argument of minus iota plus argument of z. So you can write minus of argument of iota. It means minus pi by 2 plus argument of z. Now third. Argument of minus z is equal to, we can write argument of minus 1 plus argument of z. So this is a purely real minus 1 and in the minus. So can you say 0 or pi? So pi basically minus. So pi plus argument of z. Second property is the, now see the third property is, if z is purely real, then argument of z is equal to 0 or pi 180. Now purely real पे, if z is purely real, so purely imaginary,
then argument of z is equal to pi by 2 or minus pi by 2. Till now, any doubt? Till now, any doubt? No, sir. I'm giving one question to you. Question is let 1 minute, wait 1 minute, I'm coming on the question. Question. Question is if argument of z is less than 0, then argument of minus z minus argument of z is equal to A option is pi, B is minus pi, C is minus pi by 2, D is pi by 2. Everyone do that? Vale. One more question. Let Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 conjugate is equal to iota times Z2 conjugate and argument of Z1 by Z2 is equal to pi. Then आपसे पूछा गया है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आर्गुमेंट ऑफ Z2 is equal to pi by 4. B is argument of
Z2 is equal to minus 3 pi by 4. C is argument of Z1 is equal to pi by 4. Argument of Z1 is equal to minus 3 pi by 4. This question is asking JEE Main 2022. A question 2000 में IIT एडवांस हो जाएगा. These two questions is homework question. We can do. Okay. Any doubt? We can try.